on Zoom. So before I start in, just wanted your confirmation whether my audio and video is clear. If it is clear, you can just write clear in the chat box. Whether my audio and video is clear, बता दो यार पहले. It's important for me to know that, right? Zoom वाली जनता बता दो यार, जल्दी जल्दी. पलक जी कह रही है, I will go on YouTube. I will like the video and I'll confirm on YouTube as well. Thank you, Palak ji. Thank you, Palak ji. Right? अच्छा जल्दी जल्दी बता दीजिए कि YouTube पे आवाज आ रही है कि नहीं. YouTube वाली जनता हम आपके लिए वेट कर रहे हैं. वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस. वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस. राइट. वी आर वेटिंग फॉर यू गाइस. एक सेकंड रुकिए, बस YouTube की जनता का कंफर्मेशन आ जाए फिर हम स्टार्ट कर देंगे. क्या बात है, क्या बात है. वी आर ऑल्सो लाइव ऑन YouTube प्लस वी आर ऑल्सो लाइव ऑन Zoom as well. So really happy for you guys for this clearing your CA final examinations in this attempt, right? But before I start starting this session, I just wanted to know: is it your first session, second session, or a third session, or a fourth session, or you see me every day, right? Which session you are attending? First session, second session, third session, fourth session, or you see me every day? In the chat box, please. I want you to participate, please. राइट. यूट्यूब की जनता आप लोग को चैट पे लिखना है फटफट. यूट्यूब की जनता आप लोग को चैट पे लिखना है फटाफट. इज इट योर फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन और एवरी डे? कोई मुझे जो कह रहा है कि हम आपको रोज ही देखते हैं. ओके ठीक है, चलो बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है. आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल दोज आर अटेंडिंग फॉर अ फर्स्ट टाइम, देयर आर फ्यू पीपल हु आर अटेंडिंग फॉर अ सेकंड टाइम. अच्छा, मतलब पहली बार इंसान गलती से आ सकता है, दूसरी बार तो गलती से नहीं आएगा. चलो, but that means that we are going to be having a great session today. So first of all, guys, congratulations to all of you, those who are joining for the first time. Congratulations on becoming chartered accountant. The real journey starts from today onwards because it's your first session. And now in this session, we are going to be talking about two important things. First, we are going to be talking about how to, first, we are going to be talking about deciding a domain. Which all domains are available for you guys as a qualified chartered accountant. So that is first. And second, we are going to be discussing on how to apply for some companies off campus. Okay. So we are going to be discussing on both the things out which is there. Since this session is very important and hence you are going to be needing your pen, paper and water bottle, to request you to go and bring out your pen and paper. फटाफट जाइए और pen paper लेके आइए, right? Because you guys are going to be writing a lot of things and a lot of notes are going to be written here in this session, right? Of course, I'll try to share the PDF for this, right? But it's important for you guys to please have a pen and paper so that you guys do not miss out any important thing. Okay, chalo. So let's start this session out. Now, before I start this, one interesting question which I'll ask to all of you guys. In life, since you guys are qualified chartered accountants, you have two choices in front of you. आपकी आंखों के सामने दो choices हैं, right? First choice is you need to decide whether you want to build your career, or second choice is you need to get a job. देखो, career is something which you will do out of your passion and through which you will earn a money. That is a career. Job is something which you will do for money. आप मुझे बताइए आपको क्या करना है. Do you want to build a career or do you want to have a job? क्या करना है चैट पे बताइए. Do you want to have a job or do you want to build a career? बच्चा बोला कि सर I want to build a career. Very, very good. Since you wanted to build your career out, and hence I'm going to be talking about all the important career pathways which are there, which you can build it out. Okay. So for that, I'm going to be sharing my screen and we are going to be discussing in detail what all career pathways are available to you guys as a qualified chartered accountant. ठीक है, नोट्स साथ साथ में बनाते रहेंगे. नजर हटी दुर्घटना घटी, राइट? तो ध्यान से देखेंगे. So being a chartered accountant, right, we have multiple domains available for all of us where we can start building our career. The first is called as a CA core services. Being a chartered accountant, we can walk into the core services like auditing, FDD, taxation, valuation, and some other services. Let me talk one by one for each domain and each sector which is there. The first is auditing. Auditing I divide into two major parts. First is a statutory audit. Second is internal and forensic audit. Okay. Now, everybody know what the stat audit is and why it is done and what we do in stat audit. But few important things which I want you to understand in this session, and that is, in statutory audit, nowadays, there is a division between an Indian firm and the global firm. That means
Say for example, if I'm looking for a job in EY, right? EY will have a 2 lakh, EY India, EY GDS. Deloitte will have 2 lakh, Deloitte India, Deloitte USA. Update, Deloitte USA hiring is started. तो अगर आपके कोई दोस्त भाई फ्रेंड होंगे, यू कैन रीच आउट टू देम, दे कैन रेफर यू आउट. डेलोइट यूएसए का हायरिंग स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. थर्ड, EY GDS, sorry, then PwC India, PwC SDC. Then you have KPMG, KGS, right? KPMG Global Services, and then you have KPMG India. Similarly, there is GT Indus, which is Grant Thornton Indus, and second is Grant Thornton Bharat. Okay. So this type of division is there between Indian and global firms. But the question is, what is a major division between Indian and global firm? क्या काम करते हैं? Global firm will bring out the work outside the India and will ensure that the work is done in India. मतलब क्या? Foreign से कुछ काम आएगा, and we guys sitting out in India are gonna be working for some Firangis and for global companies such as there. Why it is done? Everyone knows cost, right? Cost कम होता है. That is why the reason we are gonna be outsourcing the work. Okay. Second, don't worry, right? We'll ensure that you get this PDF. This PDF is also going to be shared in the YouTube video description after the video is over. Okay. First, attention दे के रखिए, right? And the people those are connected on Zoom, I'll be happy if you guys can keep your videos on. Doubts रहेंगे, chat पे डाल देना. We'll be happy to cover it. After this is done, there are multiple sectors in statutory audit. Which all sectors are there? 3 major sectors you will find it out. The first is called as TMT. What is TMT? Technology, media, entertainment, and telecommunications. Why this sector is important for me? IIC, infrastructure, industrial and consumer, and third is FS. Why it is important? Whenever you're going to be getting placed in any of the companies, you know what is going to be happening? HR will say that, Shivam, your interview is scheduled for FS sector tomorrow. If my interview is scheduled for FS sector tomorrow, I need to be sure that whether I want to work in FS or not. Why? Because FS includes NBFCs, mutual fund houses, banking companies, insurance companies, और मेरा करियर उसी डायरेक्शन में बनेगा. And that is why I need to be very particular when it is coming to the sector in a statutory audit domain, guys. So, stat audit, further divisions is there in all the big fours, which you'll be able to find it out, like TMT, IAC, and FS. So if you're a smart candidate, what you will do, you'll also connect with an HR unit and try to negotiate with an HR saying that, ma'am, it would be great if you could offer me a job in TMT sector instead of FS. Because FS purely service sector है. TMT purely आपका manufacturing side आ गया, right? So you just need to be smart enough, manufacturing plus service. You need to be smart enough to decide your sector for that domain. Okay, so that is there. Next, talking about the most important thing, what is the work process for any of the statutory audit domain? Right? क्या काम करते हो? Right? How does a statutory audit start? Stat audit is divided into 5 simple steps. The first step of doing a stat audit is called as a pre-planning. ये इंटरव्यू में पूछेंगे हाउ डू यू कंडक्ट अ स्टार्ट ऑडिट. 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले यू डू प्री प्लानिंग, देन यू डू प्लानिंग, वेयर यू डिसाइड ऑल द थिंग्स लाइक मटेरियलिटी एंड स्टफ, देन यू आइडेंटिफाई द रिस्क व्हिच इज देयर, देन यू डू सब्सटेंटिव टेस्टिंग व्हिच इज प्योर नंबर क्रंचिंग, and the last step you do, which is step 5, and that is conclusion. Conclusion may give an audit opinion, right? Your interview questions are going to be revolved around this 5 steps only. Okay. Now the question is, what type of work I'm going to be doing here? Whenever you're going to be joining a stat audit, you will be responsible for IFC. I hope everyone knows what IFC is, internal financial control testing. Then you will be responsible for audit of your financial statements, which is nothing but what? P&L, balance sheet and cash flow. Okay. Then you will be also responsible for tax audits. Right? आपको tax audit भी करना पड़ेगा. You'll be also responsible for indirectly बोला जाता है, right? Indies, FS, मतलब क्या sometimes indirectly you only prepare the financial statements. वैसे तो allowed नहीं होता, but indirectly you only do it. So that is there. Plus some certification work, right, which is going to be taken care of. All those things you are going to be doing as a part of a statutory audit function. Okay. So if you don't love it, this is not a domain for you. If you love it, this is a domain for you. Simple. Next. Exposure. Already I've covered it out. Okay. तो ये काम आपको करना पड़ेगा. ठीक है, I've already written, but I've written it twice.
I hope the basic of stat audit is clear. What do? You are going to be doing, what roles are going to be offered, what are the subsectors in the stat audit, what is the work process in the stat audit. So this is what our typical stat audit is. अगर किसी को screenshot मारना है तो इसका मार लो. Now you can take a screenshot of this. I think this is the entire summary for stat audit. It might help you out someday or other, right? Or if you're lazy to write this out, definitely you can take a screenshot. Okay, bang on, done. Let's move forward. Second domain. Internal audit and forensics. Now, internal audit, as everyone is aware of, internal audit is considered under or defined under Section 138. But I define or applicability of internal audit is there under Section 138 of Companies Act 2013. But what does an internal auditor do? Internal auditor have three major work. It defines what is a process, what are the risks involved in the process, and what are the controls addressing those risks. Now, let me give you a very small example. Okay, एक छोटा सा example देता हूँ. Imagine that you are the internal auditor. Attitude लाइए आप internal auditor है. Imagine that you are an internal auditor and you went to audit an internal audit for a company, say for called as Reliance. Now you're doing an internal audit of Reliance. You're doing cash and bank as a part of internal audit function. Now what you need to do, ध्यान से देखेंगे, what you need to do, since you will be seeing, please also discuss future of working in global firm. Yes, I'll cover the doubts at the end. Take a tension, mat lo. Now you went to an internal audit for a Reliance and you are doing cash and bank as a part of this. Now you found out that you need to find out what could go wrong in the company if there are control lapses. So say for example, if bank reconciliation is not prepared, what can go wrong? कोई चैट पे मुझे बता सकता है अगर कंपनी बीआरएस नहीं बनाएगी तो क्या गलत हो सकता है? Anyone in a chat box? Let's see how smart you are. If a company do not prepare a BRS statement, what can go wrong? Anyone in the chat box? Anyone in the chat box? YouTube की जनता, मैं तो आपका वेट कर रहा हूँ. Okay. If the bank reconciliation is not prepared, what is going to be happening? Someone is saying double payment can be made, right? Control over bank and cash is not there, right? So simple से एक loophole ले लेते हैं. Double payments are made. Okay. अब being a part of an internal auditor, you need to identify what is a process. आपने देखा कि process क्या है पूरा cash and bank को track करने का. Second, what are the risk involved in the process? The risk involved is double payment can be made to a customer. Right? Double payment can be made to a vendor, not customer. Double payment can be made to a vendor. मैंने समझ लिया ये दिक्कत हो सकती है. Now to ensure that this does not happen, what are the controls which are there? डबल पेमेंट ना हो इसके लिए कंपनी क्या क्या कर रही है? Number one, maker checker is there. Number two, company is preparing BRS. So what you're trying to do, you're understanding the process, you're identifying what all risks are there, and then you see what all controls are there. तीन चीजें देख रहे हैं. प्रोसेस समझा, रिस्क देखा, और उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है वो देखा. So that is what your role is as a part of an internal auditor. Now, being an internal auditor, what is your responsibility? My responsibility is number one, many a times you will be responsible to prepare the RCM. Anyone knows what is the full form of RCM? In the chat box. RCM बनाना पड़ता है आपको. Risk control matrix. Very, very good. Number one, you will be responsible for preparing RCMs. Number two, you will be also responsible for preparing the internal reports like this. इस तरीके की एक internal report होती है. I don't know how many of you remember this. Those who have done internal audit will be able to recall it. एक risk grading आप बनाते हो, high, low, and this, and then you remember the color coding. Okay, and after this is done, you prepare this type of issues you have identified, type of risk which is there, then you give a risk rating, and parallelly you identify some audit observation. Key, as on 1st/4/2022, on physical verification of 7 fixed assets were not found that were mentioned in a fixed asset register amounting to 7 lakh rupees. Risk क्या है? Potential misappropriation of fixed asset. How we can solve it? This is what the recommendation is. अच्छा, stat audit में do we give a recommendation to a company? क्या हम स्टैट ऑडिट में रिकमेंडेशन देते हैं? द आंसर इज नो. ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ रिकमेंडेशन होता है? नहीं होता है, राइट? सिर्फ ओपिनियन रहता है. इंटरनल ऑडिट में रिकमेंडेशन इज ऑलवेज देयर. लेटर ऑफ वीकनेस माइट बी गिवन, बट रिपोर्ट में कुछ नहीं होता है, गाइस. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. There is a difference between internal and stat audit. Internal audit is more towards understanding the process, understanding the controls, right?
right? Internal audit is more towards this. Statutory audit is more towards expressing the opinion on the financial statements. Now the question is, what all are the major processes in internal audit? कौन कौन से major processes है? ठीक है, इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे गाइस आपको. They'll ask you major processes and they'll ask you questions related to it. What are the major processes in internal audit? P2P, which is called as procure to pay. Second is O2C, which is called as order to cash, which is also called as R2R, which is called as revenue to receipt. Then third, which is most important, H2R. What is H2R? Hire to retire. मैं screen share कर देता हूँ for the people who want to write. Then you have other processes like fixed assets, cash and bank, treasury भी कहते हैं इसे, inventory, and FSCP. FSCP is financial statement closure procedures, मतलब book closing. So this all are the types of processes which are there, which is gonna be, which you are gonna be doing in a part of an internal audit. आसान भाषा में बोलूं तो सबसे पहले धंधे को समझो, धंधे में क्या रिस्क है उसको समझो, और उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हो वो करके दिखाओ. ये तीन काम आपको करने हैं एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, और एट द एंड या तो आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे या तो फिर आप कंपनीज के लिए आरसीएल्स बनाओगे. ठीक है, ये आपका काम है. इफ यू लव दिस, गो हियर. इफ यू डोंट लव दिस, गो इन अनदर डोमेन. क्लियर? I hope two major domains are clear to you: internal audit and stat audit. Now, one good thing: company can have their own in-house internal audit team. Agree? But company cannot have their own in-house stat audit team. मतलब आपको जॉब वैकेंसी इंटरनल ऑडिट की रिलायंस में मिलेगी, बट जॉब वैकेंसी फॉर स्टार्ट ऑडिट यू वोंट फाइंड इन रिलायंस. आई होप यू गॉट इट, राइट? तो इंटरनल ऑडिट में आपको सीए फर्म्स में भी जॉब कर सकते हो, इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकते हो. Basic is clear, but in stat audit you can only work with CFO. That is there. Okay, so this is the second domain which you are talking about. Now the third very interesting domain, which is a growing domain nowadays, and that is called as the forensic audit. Now what does forensic mean? Forensic शब्द से क्या दिमाग में आता है आपको? If I say forensic, what is the first thing which comes to your mind? Anyone in the chat? क्या आएगा आपके दिमाग में सबसे पहले अगर मैंने कहा forensic audit? कोई कह सकता है, बता सकता है? What is the first thing which comes to your mind when I say forensic audit? कोई कह रहा है इन्वेस्टिगेशन. मैं कहता हूँ फ्रॉड. इस द थर्ड वर्ड व्हिच कम्स टू माय माइंड इज अ व्हेन आई टॉक अबाउट फोरेंसिक ऑडिट. देखो, नाउअडेज प्लीज अंडरस्टैंड द फ्रॉड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ. डू यू थिंक एवरी कंपनी इज अ फ्रॉड? क्या आपको लगता है हर कंपनी चोर है? क्या आपको लगता है हर एक कंपनी चोर है? यूट्यूब की जनता, आप चैट पे नहीं बोल रहे हो, ऐसा ना करे, दिल ना तोड़े हमारा, आप ही के लिए सेशन ले रहे हैं. क्या आपको लगता है हर एक कंपनी चोर है? करिश्मा जी कह रही है हाँ. ना ना बेटा ना, हर कंपनी चोर नहीं है. अच्छा, आई आस्क यू सेकंड क्वेश्चन. कैन एवरी कंपनी डू फ्रॉड इफ देयर इज अ लैप्स इन इंटरनल कंट्रोल? क्या हर कंपनी चोरी कर सकती है अगर इंटरनल कंट्रोल लैप्स है तो? बच्चा बोला हाँ. नाउ सी, सिंस प्लीज अंडरस्टैंड, since every company can do a fraud if there is a lapse in a control, but even if the control are implemented, can company do a fraud? The answer is yes. Example भारत पे, अश्नीर भैया. अश्नीर भैया की स्टोरी पता है कि नहीं पता है? Why he got removed from भारत पे? किसी को पता है कि नहीं पता है? मैम आप बता पाओगे? डू यू नो why he removed from a company? Anyone knows? Raise of your hand if you know why he got removed from a company. 2 करोड़ की डाइनिंग टेबल खरीदा इसलिए? Anyone know why he got removed from a company? भारत पे से क्यों निकाल दिया? Anyone raise of your hands if you can answer it. Sir, I know. Raise of your hands if you can answer it. वीडियो ऑन करके, नालायक, वीडियो ऑन करके. किसी को नहीं पता? पता है बट डर रहे हैं. यूट्यूब लाइव में शक्ल दिख जाएगी हमारी. अच्छा है ना, फेमस हो जाओगे इतने सारे सी लोग के सामने. नहीं, ठीक है, चलो ग्रेट. तो आई टेल यू द रीजन, राइट? व्हाई समवन इज सेइंग सैलरी टू वाइफ, समवन इज सेइंग दोगलापन. नहीं बेटा, राइट? इट वाज अ सेइंग दैट ही यूज्ड अ कंपनीज मनी फॉर अ पर्सनल पर्पस. कंपनी का पैसा अपने खुद के पर्पस के लिए यूज करता था. दैट इज व्हाई इट इज देयर. नाउ कंट्रोल्स वर देयर, मेकर चेकर वाज देयर,
but still he do the fraud. To identify that, we hired a forensic auditor. Who are a forensic auditor? The people like you. What is the power you have? You have a power to remove a person from the company. You have a power to remove a person from Shark Tank season 2. Now, do you think that since a forensic audit is growing these days, छोटा सा example लेते हैं. Few days back before the elections, everybody got to know that the data for electoral bond was out, right? अच्छा, अब since government of India want to do a forensic audit of this, can they do it? Yes. किसी ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप किया और बोलेगा कि नहीं यार ये तो फ्रॉड हो सकता है. रिलायंस जैसी कंपनी मोदी गवर्नमेंट को क्यों पैसा दे रही है? मुझे बिल्ड करना है, इसका ट्रेल बिल्ड करना है, कुछ तो फ्रॉड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. Who will do this? You will do this. Why? Because it's all about data. It's all about understanding business transactions. क्या आपको लगता है इंजीनियर कर पाएगा? क्या आपको लगता है इंजीनियर कर पाएगा? इल्ले, he can't do it. Who can do it? You can do it. And that is why your scope is there in a forensic audit. Have you got it? ठीक है, just don't take it in a wrong sense. Just explaining you the example. So sorry, hardcore बीजेपी फैन फॉलोअर्स, माफ कर देना, बस समझाने के लिए बता रहा था, कुछ लोग ऑफेंड हो गए. नहीं बेटा, ऐसे ऑफेंड नहीं होते. चलो ठीक है. तो बेसिक ऑफ इंटरनल ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट इज क्लियर टू यू. व्हाट इज इंटरनल एंड व्हाट इज फॉरेंसिक ऑडिट? क्लियर? ले लो फोटो जिसको लेना है. राइट, फोटो फोटो फोटो. राइट, आई नो यू गाइस आर लेजी, फ्यू ऑफ यू आर लेजी. श्रुति कह रही है मुझे बोलने का जरूरत ही नहीं, मैंने पहले ही क्लिक कर लिया सर. वेरी वेरी गुड. This is a second domain, which is called as a forensic audit. Moving to the third domain, which is nowadays very much growing, and that is FDD, financial due diligence. Right? Very, very interesting domain and growing domain. By the way, if you don't know, हर एक डोमेन पे मेरे यूट्यूब चैनल पे या तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी या तो डिटेल डिस्कशन फॉर 1 hour सेशन मिलेगा. If you can take that pain in your life, you can just go and search a playlist section on my YouTube. You'll find out around 20 hours or 15 hours of a content is uploaded on Start Audit only. ठीक है. FDD का मेरे YouTube पे अराउंड 5 से 6 घंटे का कंटेंट अवेलेबल है. तो आई कैन स्पीक ऑन एवरी टॉपिक फॉर 20 hours, which I've already spoken in the masterclass which is there. But let us understand what FDD is. Now imagine that, ध्यान से सुनेंगे, I'll also explain the process of IB. Right? Imagine that there's a company called as a CMO. ठीक है, your favorite company of course. Yes or no? Yes, yes, yes. जब तक के जॉब दिलाओगे सर तब तक के फेवरेट है, उसके बाद हम देखेंगे. बेटा, इसे कहते हैं लालच. ठीक है, लालच बुरी बला है गणेश जी. ठीक है, चलो. तो इमेजिन दैट सीएमओ इज योर फेवरेट कंपनी, राइट? कोई नालायक अभी तक के एसपीओएम में अटका पड़ा है. अरे मेरे भाई क्यों टेंशन ले रहा है तू, अभी इस पे सेशन पे फोकस करना. वो पूछ रहा है एसपीओएम नहीं दिया तो कैंपस में बैठ सकते हैं क्या? अरे बैठ सकते हैं भाई, तू अभी इधर ध्यान दे. ठीक है. नाउ इमेजिन दैट योर फेवरेट कंपनी वांट्स टू रेज अ फंड. ठीक है, हमें 100 करोड़ का फंडिंग रेज करना था बिकॉज वी वांटेड टू ग्रो 10x and 20x, and we came to people like you, right? Why? Because you are a chartered accountant. And I came to know that you have 1 crore of rupees or you have 5 crore of rupees with you. है आपके पास, I know that. So I came to you and say that, bro, give me 5 crore rupees now for investment in a CMO. Against that, I'll give you an equity of my company. ठीक है. अब सवाल ये आता है कि आप ऐसे ही दे दोगे क्या मुझे 5 करोड़ रुपए? कोई देगा ऐसे ही? एनीवन इंटरेस्टेड? हाँ. कुसुम जी कह रही है मैं 10 रुपए ना दूं, 5 करोड़ की बात कर रहे हो आप. नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते. हाँ, नहीं दोगे. तो कब दोगे 5 करोड़ रुपए? कब दोगे? कब दोगे 5 करोड़ रुपए? वेन यू विल ट्रस्ट. नालायक कोई कह रहा है 20% इंटरेस्ट दोगे तब देंगे. हाँ. वेन यू विल ट्रस्ट दैट द फाइनेंशियल्स ऑफ अ सीएमओ आर रियली स्ट्रांग एंड द कंपनी इज गोना बी ग्रोइंग ऑन अ फ्यूचर डेट. एग्री? यस. आपने विश्वास किया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, तो मैं अभी इस पे इन्वेस्ट कर देता हूं. मैं जोमेटो का शेयर आज इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि द शेयर प्राइस ऑफ द जोमेटो विल क्रॉस 1000 रुपीज आफ्टर 2 years or 3 years. राइट? नाउ व्हाट यू guys are going to be doing before you guys are going to be investing your money in any of the company, it's important to conduct a due diligence. बट सवाल ये आता है सर कंपनी ऑडिट तो कर रही है. एग्री? द कंपनी इज डूइंग एन ऑडिट, देन व्हाई द हेल वी नीड टू डू ड्यू डिलिजेंस?
Why the hell we need to conduct a due diligence? कोई गेस कर सकता है रीजन इन द चैट बॉक्स कि सर एक ऑडिट तो हो रहा है, right? We are doing an audit of a company, but why the hell we are doing a due diligence of a company? Anyone in the chat box? Yes, very good answer. Number one. Someone is saying investor specific check will be done. Very good. Second, audit is not due diligence. Okay. Audit, do not see this. Okay. The scope of audit is, of course, limited. Yes. Okay. Financial visibility. Okay. Understand one thing. In due diligence, you do three major things. You calculate EBITDA, adjusted EBITDA. Second, you calculate working capital. एंड थर्ड यू डू नेट डेट. ये तीन मेजर चीजें होती है एफडीडी में, नेट डेट और नेट कैश. इन ड्यू डिलिजेंस is done for minimum 3 years and it can go up to 5 years or 6 years. Audit is only done for 1 year. Number three, in audit, I do not care about the normal operating profit of a company. मुझे फर्क नहीं पड़ता. But in due diligence, I'll care for a normal operating profit because your valuation is going to be done based on EBITDA. अब छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. इमेजिन दैट आई गो इनटू शार्क टैंक. आई टेल टू द कंपनी दैट आई वांट अ फंड, आई वांट अ मनी, एंड आई टेल देम माय एबिटा इज 10 करोड़. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हर्ड नमिता बोलती है कि आपका एबिटा 10 करोड़ है तो विल गिव यू वैल्यूएशन ऑफ 5x, योर वैल्यूएशन बिकम 50 करोड़. बट कैन कंपनी डू सम फ्रॉड इन अ एबिटा? यस. मुझे लग रहा है कि मेरे सीएफओ को मैं सैलरी 1 करोड़ का दे रहा हूँ. आई रिमूव अ सीएफओ फ्रॉम माय कंपनी. कैन आई डू दैट? यस. ऑडिट में इंपैक्ट आएगा? नो. एफडीडी में इंपैक्ट आएगा? आंसर इज यस. So I need to consider it and bring it to a normalized profit which is there, and I'm going to be ensuring that I'm going to be calculating a valuation of a company correctly, right? So this is what you're going to be doing in a due diligence which is there. And of course, due diligence is going to be done from both the side, buy side and sell side. Okay. बाय साइड पे कौन बैठा है? आप, क्योंकि आप मेरी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो. यू आर रेडी टू परचेस माय शेयर. हु इज सिटिंग ऑन अ सेल साइड? आई एम सिटिंग ऑन सेल साइड. व्हाई? बिकॉज आई एम रेडी टू सेल माय शेयर्स. तुम मेरे शेयर्स ले लो. तो दोनों साइड से होता है, बाय साइड एंड सेल साइड. राइट, आई हैव कवर्ड इट इन अ वेरी शॉर्ट वे. राइट, आई नो दैट, बट आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू कैन डू वन थिंग, एंड दैट इज यू कैन जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल. आई जस्ट शो इट टू यू. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो. And after you go to my YouTube channel, आपको एक छोटा सा काम करना है. You just need to do a small thing. What is the one thing you are going to be doing? जो करेगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं होगा, of course. Right? There's a playlist section in a YouTube channel. You can scroll down, scroll down, scroll down. There's a playlist on management consulting. There's a playlist on FDD. Right? There's also a playlist on storytelling. There's a playlist on students, those who got into best companies. Right? Some of the basic playlists which I've done. If you have a time in your life, you can watch it. Similarly, कुछ पास्ट में काफी अच्छे सेशंस हुए. इफ यू हैव टाइम इन योर लाइफ यू कैन वॉच इट. जैसे कि यू कैन वॉच अ सेशन ऑन, अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, आईसीआई कैंपस का. वॉच इट बैंगॉन. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ जॉब इन दुबई, यू कैन वॉच इट आउट. इफ यू वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू टू सी कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं एफडीडी के, इट्स देयर. राइट, हाउ टू, इफ यू वांट टू सी हाउ टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वी ऑलरेडी हैड अ 1 hour 20 minute सेशन ऑन आईबी. वी ऑलरेडी हैव 1 hour सेशन ऑन कंसल्टिंग. ओके. If you are interested to know about PSU job, you can watch this. Banking का जानना है ये, EYGDS का ये. You want to do MBA, it's there. Practice का करना है, it's there. Reliance का जानना है preparation, it's there. ठीक है, तो if you just need to scroll it down and see what all are the sessions which you have done, Excel automation सीखना है, it's there, right? So we've covered a lot of great sessions for you guys in the past, so that you can just see it out. And the only problem is you just need to devote a time and just see the playlist and the videos that are there. Okay, so this is what a third domain is, which is due diligence. Let's move to the fourth and very interesting domain, which is related to taxation. Now understand one thing, taxation में 3 types of works are majorly done. Either it is direct tax or indirect tax. 3 प्रकार के majority काम होते हैं in taxation domain, which is compliance, advisory and litigation. Whichever taxation firm you are going to be joining, whichever place you are going to be joining, you are going to be working under three parameters. Understand one thing, compliance is going to be automated after a few years. If you get a chance to work in any of the company, try to work towards advisory and litigation side. That is there. Now, what all job roles are available in direct taxation and TP? GMS, which is Global Mobility Services, means that, Nikhil ji, sun lijiye baat dhyan se. Right, you are sitting in India and doing an audit of a company outside India,
or generally you're involved in expat tax or NRA tax, right? India में बैठ के foreign companies का tax returns and you're taking care of that. So that is part of GMS. Second is FS. FS includes those companies which are involved in banking, NBFCs, insurance. So uska you're doing a direct taxation. Third is M&A taxation, mergers and acquisition tax. It is a really nice and growing domain. If you're interested, right, you have a good scope in future here. If the two companies are merging, right, or a demerger or merger is happening between two companies out, you can help the companies to plan. Reliance entity A is in profit, entity B in loss, right? कब तक के इसको split रखे और कब तक के इसको merge रखे? Everyone knows Jio got divided from Reliance very late. You know the reason why, right? It was a tax planning. Then last very interesting domain is CIT, which is called as corporate and international tax. ये चार major domains होते हैं where you'll find out majority of vacancies in the taxation domain for direct tax. Then of course you have TP and international taxation, right? TP and international taxation. So this is again the domain which you can find it out for a part of taxation. If I talk about IDT domain, right? IDT may you will find out majority vacancy is there in GST, customs, and FTP, and everyone knows that this is what the work you are going to be doing. Compliance, advisory, and litigation. Okay. So this is what about the taxation domain is. Subdomains मैंने बता दिया, which is important. Many of you don't know it. Then if I talk about CA core services, nowadays valuation is again a growing side and a growing domain for a lot of chartered accountants like you, because this is one of the emerging domain where a lot of vacancies are coming these days. Or every Big Four have started their division called as a valuation nowadays. So ये एक बहुत बढ़िया domain grow हो रहा है. If you're interested, of course, you can try for this domain as well. Valuation can be related to asset. Valuation can be related to transaction. It can be related to goods. It can be related to company as well. Right? तो ये सब टाइप के वैल्यूएशन के डोमेन्स सब डोमेन्स आर ग्रोइंग फॉर यू गाइस. इसके अलावा सीए कुछ अदर कोर सर्विसेज भी देता है, जैसे कि एसएपी कंसल्टिंग, फंड रेजिंग और प्रोजेक्ट फाइनेंस, सर्टिफिकेशन, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड. एक बढ़िया डोमेन ग्रो हो रहा है विच इज नाउअडेज इज इंसेंटिव, राइट? इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी. This is one of the very growing domain nowadays where a lot of CAs are starting their practice, and if you're interested, you can of course try thinking of this domain as well. ठीक है, अगर किसी को इसका स्नैपशॉट मानना है तो इसका भी आप स्नैपशॉट ले सकते हो. ठीक है, इंसेंटिव्स एंड सब्सिडी. अरे गीच लो फोटो गीच लो. ठीक है, इजी पीजी. Basic is clear. Explain more के लिए I've told you sessions are there, right? Because of a given time constraint, right? We are trying to cover as much as possible. Detail हर एक सेशन के वीडियोस जब सेशन प्लान होंगे आ जाएंगे. कुछ के ऑलरेडी डले हुए हैं, कुछ के नहीं डले हुए हैं, राइट? तो विल ट्राई टू अपलोड इट. ठीक है, डन. बेसिक इज क्लियर. व्हाट आर द कोर सर्विसेज ऑफ अ सीए? आज हमको समझ में आ गया भैया सीए ये सब काम करता है, राइट? विच इज देयर, which every only of you have got a detailed clarity on. Okay. Now coming to the other part, right? There are other domains also which I'll be talking in a while. So first I've covered the major CA core services which are there. But I hope till now you're enjoying the session. अरे बोलो बता दो यार, मेरे को भी एनर्जी मिलेगा if you say yes, hopefully. I hope you're enjoying the session till now. Yes, bang on. Great. I hope you're learning something new. कुछ नया सीख लिया थोड़ा बहुत कि हाँ यार ये भी रहता है यार. Okay, bang on. Great. Now next very important thing, right, which I'll come to it in a while, and that is regarding application, right? Like if you want to apply for a job off campus, two things are important. Number one, your profile should be very, very strong. And number two, you should be smart enough and you should know where the vacancies are. But the problem is, every Tom, Dick and Harry will apply for the job where there is a vacancy. So what is going to be differentiating you from others? First is your resume. Second is your references. Third, how good you are into that work. अगर वैकेंसी आई है आईबी का और आपने आईबी में कभी काम ही नहीं किया है, और इफ यू डोंट हैव डन अ फाइनेंशियल मॉडलिंग, इफ यू डोंट हैव दैट नॉलेज, गॉन. स्टार्ट ऑडिट ईवाई वैकेंसी इज देयर. इफ यू डोंट नो भैया स्टार्ट ऑडिट कैसे होता है, यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट अ मटेरियलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा सिलेक्शन, राइट? तो 3 स्टेप्स होती है. सबसे पहला, फाइंडिंग आउट अ जॉब. आफ्टर यू फाइंड आउट अ जॉब, you need to be smart enough to apply there, right?
And after you apply there, the next step is you need to ensure that you clear that job. ठीक है. Finding a job आज हम देखेंगे कि कैसे find out करते हैं. I'll tell you 2-3 ways through which you can find it out. There are multiple portals and places where you can create your profiles. ठीक है. The first portal, of course, everyone of you must have created a profile is on LinkedIn. ठीक है. तो LinkedIn में सबसे powerful tool है. LinkedIn में job section is there. Once you go here in the job section, what you can do, there's a search bar. You can just write chartered accountant. The time you write chartered accountant, you'll start getting a lot of jobs for a chartered accountant, which is there. एक job. मैं filter हटा देता हूँ. There are a lot of filters I put it out. अरे यार, reset लो. The time you write chartered accountant, you'll start getting a lot of job vacancies for a chartered accountant. देखो, general manager, chartered accountant, job vacancies there. What you can do, you can just filter it out based on entry level. Entry level मतलब freshers. And then you can see which all jobs are there. जैसे डीमार्ट की जॉब आई है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फ्रेशर के लिए, राइट. तो जैसे अभी आई थिंक मुझे एक और जॉब दिख रही थी आईसीआईसी बैंक की. कैन यू सी आईसीआईसी बैंक जॉब वैकेंसीज देयर? इट्स आउट. व्हाट आई डिड, लिंक्डइन पे जस्ट में गया, देखो ये जेपी मॉर्गन की जॉब वैकेंसी मिल गई मुझे, राइट. इट इज 1 वीक अगो. So what I'm doing, right? I'm just filtering and writing out the keyword and I'm getting a job. Similarly, जैसे मैं keyword change करूंगा, right? जैसे CA fresher, and I'll click on search. I'll start getting some jobs for a CA fresher which are posted by companies in few days ago. किसने डाला है? डेलॉयट. इसने डाला है. PwC ने डाला है. मैंने नहीं डाला है. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, पास आउट, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, डेलॉयट की वैकेंसी, राइट. एएमसी सर्विसेज, देयर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर देयर. स्क्रॉल करते जाए, जॉब मिलते जाएगा. केपीएमजी का मिल गया, डेलॉयट का मिल गया, राइट. तो यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल इट आउट. जेनपैक का मिल गया, राइट. जब स्क्रॉल करते जाइए, जॉब मिलते जाएगा. द ओनली प्रॉब्लम इज यू नीड टू सर्च. बट द सेकंड प्रॉब्लम इज लॉट ऑफ पीपल विल अप्लाई. So you need to gather some good and smart references, and whenever you are getting some calls, you need to be smart enough to clear it out. सारा गेम कीवर्ड का है. सेकेंडली सेम वर्क करता है नौकरी में. नौकरी में अगर आप क्या करोगे, सर्च इंजन में जैसे नौकरी में प्रोफाइल बनाओगे, सर्च जॉब सीए फ्रेशर. द टाइम यू राइट सीए फ्रेशर, एक्सपीरियंस फ्रेशर लेस देन 1 ईयर, सर्च करेंगे, विल फाइंड आउट जॉब्स. कितनी जॉब्स है? 240 जॉब्स है सीए फ्रेशर के लिए. क्या आप बात कर रहे हो? सच बात कर रहा हूँ भाई. ऐसे ना मुझे तुम देखो, राइट. देयर लॉट ऑफ जॉब्स. द ओनली प्रॉब्लम इज यू नीड टू फाइंड आउट एंड अप्लाई. आपको ढूंढना है, अप्लाई करना है. देखो कोटक का गया है, कोटक महिंद्रा का जॉब डाला हुआ है, टाटा का जॉब डाला हुआ है, टाटा कम्युनिकेशन. अब दिक्कत क्या है? वंस आई गो हियर, राइट, वंस आई गो हियर, एक ओपनिंग है, कुछ घंटे पहले डली है, 33 लोग ने अप्लाई भी कर दिया, राइट. जॉब अप्लाई करने से जॉब नहीं मिलती. इफ यू आर थिंकिंग दैट इफ आई जस्ट अप्लाई एंड आई विल गेट अ जॉब, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज यू नो द नंबर दिस टाइम. आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर, आई एम मेकिंग यू अवेयर. What you need to do, you need to find out the references, you need to push your CV, and you need to also ensure that your CVs are taken care of properly. And for that, you need some community, you need some references, you need some people inside that company, or you need to ensure that your CV is perfect according to the requirements and need. And one of the best thing is, you should be the first mover. क्योंकि अगर आप नौकरी में देखोगे, तो नौकरी में पता है क्या आता है? ये आता है अर्ली एप्लीकेशन. अर्ली एप्लीकेशन मतलब जो जल्दी अप्लाई करेगा उसको जल्दी कॉल आएगा, जो लेट अप्लाई करेगा माइट नॉट गेट अ कॉल. आई होप यू नो द रीजन व्हाई. इट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट मोवर एडवांटेज, राइट. सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. तो हम लोग क्या करते हैं, राइट, इन सीएमओ कम्युनिटी वी हैव बिल्ड आउट अ कम्युनिटी फॉर स्टूडेंट्स व्हिच इज देयर, एंड व्हाट वी ट्राई टू डू, राइट, व्हाट वी ट्राई टू डू, जब भी कोई वैकेंसी आ जाती है तो हम लोग कम्युनिटी में सबसे पहले डाल देते हैं फॉर ऑल आवर जीआर स्टूडेंट्स, सो दैट दे कैन गेट अपडेटेड एज सून एज पॉसिबल. So that is also there. ठीक है. तो that is what I wanted to tell you. चलो, तो आई होप बेसिक क्लियर हो गया कि कहाँ का आपको अप्लाई करना है. देखो, 2 मेजर पोर्टल्स है, लिंक्डइन एंड नौकरी, जहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसी विल फाइंड इट आउट. इसके अलावा देयर आर अदर जॉब पोर्टल्स एज वेल वेयर यू कैन अप्लाई इफ यू हैव अ टाइम, बट दिस आर द 2 मेजर जॉब पोर्टल्स जहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी मिलेगी आपको. ओके. Similarly, CMO also have its a placement program where you can apply, which is called as the Sambhav. I don't know if you've got a link or not. Apply those form very seriously so that you do not miss out any of the vacancies which is there. Okay. Now let's move to the next company or domain. Right. Let's move to the next domain which is there, which is on management consulting. Right. If you're interested to see what management consulting is, already I've taken 1 hour session on management consulting. I've just shown it to you, but just explaining in a short. What is management consulting?
मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज डिफाइंड इन थ्री सिंपल वर्ड्स व्हिच सेज प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टॉप मैनेजमेंट एट अ फास्टर स्पीड। ये कंसल्टिंग होता है। मतलब क्या? मान लो सीएमओ के पास एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? वी वांट टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू टू 100x। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं गया कंसल्टेंट के पास, बोला यार 100x रेवेन्यू करना है, बताओ कैसे करो 8x सेकंड में। द कंसल्टेंट सेड दैट सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट एमबीए मॉन्क, और व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज द वे यू गिव फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऐसे आप एमबीएस को भी करो। साल में 30,000 अगर सीए बनेंगे तो 3 लाख एमबीएस बनेंगे, तो आपका रेवेन्यू वैसे ही बढ़ जाएगा। आई सेड ओह नाइस आइडिया। देन आई आस्क्ड हिम भैया बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। So what I'm doing, I'm going to consultant with a problem statement. That consultant is helping me to solve that problem statement, right? तो कंसल्टेंट जो होगा वो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करेगा। तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज नथिंग बट व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर टॉप मैनेजमेंट। आई एम एट अ टॉप मैनेजमेंट, यस, एट अ फास्टर स्पीड। और एकदम तेजी से करना पड़ेगा, धीरे धीरे अलाउड नहीं है। एंड दैट इज व्हाई कंसल्टिंग इज हैविंग अ ह्यूज प्रेशर एंड ह्यूज मनी। अंडरस्टैंड, लाइफ में एक रूल याद रखे, जहां प्रेशर ज्यादा रहेगा वहां पैसा ज्यादा रहेगा, बिकॉज दे वांट टू रिटेन द एम्प्लॉइज। अगर प्रेशर कम है तो पैसा भी कम रहेगा। ठीक है, तो दैट इज। तो दिस इज व्हाट अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग इज। बेसिक आई होप क्लियर है। डिटेल डिस्कशन मैंने एक सेशन में ऑलरेडी किया हुआ है, 1 घंटे के सेशन में, वहां पे आप देख सकते हो उसको। नेक्स्ट वेरी ग्रोइंग एंड इंटरेस्टिंग डोमेन नाउअडेज व्हिच इज फाइनेंस एंड बैंकिंग, जहाँ पे लॉट ऑफ बैंक्स आर हायरिंग दिस डेज लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, right, RBL bank, a lot of banks which are hiring. And if you could see, right, major hiring is going to be done for a credit manager and relationship manager and treasury role or finance domain. इन सब डोमेन्स के लिए आपको ज्यादातर वैकेंसीज मिलेगी व्हेन यू आर गोना बी गोइंग फॉर द बैंकिंग कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई बैंक और से फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफर्ड एज अ क्रेडिट मैनेजर? काम क्या होता है क्रेडिट मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर का? एकदम आसान भाषा में, रिलेशनशिप मैनेजर नीड टू मेंटेन द रिलेशनशिप एंड ब्रिंग द बिजनेस। रिपीट, relationship manager will ensure that relationship are maintained and bring the business. Credit manager will ensure that whatever the business have been brought, उसको मैं, राइट, जो क्रेडिट अप्रूवल होगा, तो आई इंश्योर दैट दैट अप्रूवल इज डन। तो से फॉर एग्जांपल सीएमओ वांटेड टू एक्सपांड इट्स वेंचर इनटू एमबीए साइड, तो दे डिसाइडेड टू लॉन्च एमबीए बॉन्ग, एंड फॉर दैट आई नीड 100 करोड़ ऑफ रुपीज। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक को बोला, हे आईसीआईसीआई बैंक गिव मी 100 करोड़ ऑफ रुपीज। रिलेशनशिप मैनेजर बोला दिलवा देंगे। धंधा लेके कौन आया? रिलेशनशिप मैनेजर। ओके, क्रेडिट मैनेजर क्या करेगा? ओ नाउ सीएमओ गॉट 100 करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ लोन। क्रेडिट मैनेजर बोलेगा सर आपका प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो, सर आप सिक्योरिटी दो, सर वी वांट टू सी योर करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर वी वांट टू टेस्ट योर कोवैलेंस। ये कौन कर रहा है? क्रेडिट मैनेजर। तो क्रेडिट मैनेजर जो धंधा आया उसको अप्रूव करेगा क्रेडिट मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर धंधा लाएगा। और ट्रेजरी वाला क्या करेगा? ट्रेजरी गाइस गोना बी मैनेजिंग द मनी विच इज देयर विद द बैंक और विल हेल्प द पीपल दोज हु नीड द मनी इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स फ्यूचर फॉरवर्ड्स हो जाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आई होप कुछ लोग को सेशन हैवी जा रहा है, मेरे को सब दिख रहा है, राइट? ट्रेजरी मैनेजर क्या करेगा? वट एवर द फंड्स बैंक्स हैव, दैट इज समथिंग दे आर गोना बी मैनेजिंग, or they are going to be helping the people like me if I'm dealing with future forwards or if I'm dealing with some foreign transaction. So treasury guy is going to be helping me to do all these operations. अब हर एक कंपनी में ऑफ कोर्स फाइनेंस डोमेन रहेगा बिकॉज एवरी कंपनी नीड टू रन, एवरी कंपनी नीड टू इंश्योर दैट दे आर गोना बी हैविंग अ प्रॉपर बिजनेस। तो बैकएंड में टीम रहेगी, दोस्त इज गोना बी टेकिंग केयर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट डन। वो सब कौन करेगा? फाइनेंस टीम। दैट इज अ टिपिकल रोल इन द फाइनेंस फंक्शन, राइट? तो ये बेसिक रोल है जो काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है बैंकिंग डोमेन में, right? If you're interested, you can again take a role here. If you're not interested, then anyways you have other roles which are available, right? इतना क्लियर है आपको गाइस? हैवी हो गया क्या सेशन? और यू आर एंजॉइंग इट? इज द सेशन गेटिंग हैवी और यू आर एंजॉइंग इट? क्लियर क्लियर कि ऑल क्लियर? हाँ, सिमरन जी बताएंगे। सिमरन जी क्लियर क्लियर कि ऑल क्लियर? हाँ, Sir, it's clear. क्लियर क्लियर, ओके जी, ओके, चलो ग्रेट। एनालाइजिंग द क्रेडिट वर्दिनेस, अच्छा है, ओके जी, ओके, राइट।
एंजॉइंग एंजॉइंग, चलो ग्रेट, आगे बढ़े। थोड़ा हैवी हो गया। आय हाय हाय हाय, ये तो भैया हम सीए लोग काम करते तो यू शुड नो दिस, बट नेवरदलेस राइट, यू ऑलवेज हैव अ यूट्यूब सेशन, यू कैन एनी टाइम वॉच इट आउट। हाँ, कोई कह रहा था कि सर आप 2x में क्यों नहीं बोलते, या कोई नालायक कह रहा था कि सर जब से मैं सीए में आया हूं मेरे 2x में देखने की आदत हो गई है। अब कहाँ गया आपका 2x है? हर जगह 2x अप्लाई नहीं होता बेटा, फंस जाओगे, किसी को बोल मत देना नहीं तो डंडा पड़ जाएगा। ठीक है, हर जगह 2x अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऑफ कैंपस या कैंपस वेट करें, विल डिस्कस इट आउट। देखो, ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस, ए और बी, विच एवर इज देयर सब्जेक्ट टू हायर सैलरी। समझ गए, का आंसर मिल गया। कैंपस के लिए वेट करना कि नहीं करना, ए और बी, विच एवर इज अर्लियर सब्जेक्ट टू हायर सैलरी एंड सब्जेक्ट टू योर ड्रीम डोमेन, खत्म। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? ये अभी मैं कवर नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज अभी तो कुछ हैवी हो गया है ऐसे लोगों को, और कुछ लोग ऐसे चेहरा बना रहे हैं। बट आईबी का ऑलरेडी सेशन अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगेन 1 घंटे का मैंने अभी दिखा दिया था, कंसल्टिंग का भी और आईबी का सेशन अवेलेबल है, बहुत प्यारे सेशन है। अगर समय होगा तो देख लेना, अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, गो एंड चेक इट आउट, दिस एंटायर प्लेलिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विच इज देयर। और कुछ ऐसे सेशंस डले हुए हैं विच इज रियली रियली नाइस। कोई कह रहा है एक बार फिर से बता दो कहाँ पे है। बेटा जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू कैन डू इट, बिकॉज इट इज ओनली गोना बी हेल्पिंग आउट। जब जॉब लग जाएगी तब अनसब्सक्राइब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी यू कैन नॉट अफोर्ड टू, कि भाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिस आउट हो जाए, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। कुछ नहीं है, देखो सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे जाना, लाइव पे क्लिक करना, राइट। सबसे पहला आपको सेशन देखना है, अगर आपने कैंपस वाला नहीं देखा है तो ये। सेकंड, ये बहुत प्यारा सेशन है, हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोज हु इंटरेस्टेड इनटू आईबी यू शुड वॉच दिस। जिसको एफडीडी में जाना है आप ये वाला सेशन देख सकते हो, राइट, विच इज देयर। कंसल्टिंग और आईबी का ऑलरेडी 1-1 घंटे का सेशन लिया गया है, जस्ट अभी ताजा ताजा ही सेशन है। ठीक है, यू कैन जस्ट वॉच दिस सेशन आउट, इट इज जेन्युइनली गोना बी हेल्पिंग आउट। ये दोनों सेशन देख लीजिएगा, समय होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देना। इफ यू वांट टू गेट अ पीएसयू जॉब तो ये भी बहुत प्यारा सेशन है, यू कैन जस्ट वॉच इट आउट। ठीक है, इसके अलावा आई टू डू द प्लेलिस्ट सेक्शन। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। डू दे हायर फ्रेशर्स फॉर एफडीडी? हाँ जी शिवम जी, फ्रेशर्स को हायर किया जाता है बहुत एग्रेसिवली, राइट। तो वो आप देख सकते हो, फ्रेशर्स को हायर किया जाता है। चलो, I'll cover about 2-3 domains which is there, and then I'll take open the forum for doubts as well. Next move करते हैं, right, corporate के तरफ। So there are a lot of corporates which are going to be there, which are going to be hiring as a leadership program, which is also called as a management trainee. What is a management trainee? I've already explained it earlier, again explaining the same. Say for example, I'll be hiring in my company, I'll be rotating you across multiple roles, and we want you to see as a CFO of a company after a few years. That is a management trainee role. A lot of companies will have a management trainee program. They might call it as a CFO planning or management trainee program. Now, what are the roles offered in any of the finance domain? अगर Reliance join करूंगा या Flipkart join करूंगा तो क्या क्या roles मिलेंगे? First, of course, you'll get some accounts and reporting role where you're going to be responsible for accounts receivable, accounts payable plus inventory, GL और MIS. ये सब मल्टीपल रोल्स रहेंगे जहां पे आप प्लॉटेड रहोगे। वेरी बेसिक। AR side and revenue side मतलब you will be plotted under a business function, those is responsible for booking of sales. तो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज देखना है, you need to ensure that the proper revenue numbers are booked. Accounts payable side plus inventory valuation is done properly. You're part of a GL, that means you're responsible for ensuring that financial statements are prepared correctly. If you're part of MIS team, you will be preparing a MIS report also, and you are going to be sharing with investors and stakeholders which are there. So that is there. Every company have a treasury department, so you will be responsible for managing a funds, forex, future forwards, working capital. ये सब आप देखोगे. DT and IDT, the company like Reliance will have their own direct tax team and indirect team tax team, so that is there. And the last and very growing domain this is FP&A / business finance. FP&A और बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? सिंपल वर्ड में ही समझ आंसर है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। सिंपल एग्जांपल लेता हूं, Amazon wants to launch their own iPhone. The iPhone name is Monk iPhone. हाँ हाँ हाँ, एज Amazon को अपना फोन लॉन्च करना है, वो मेरे से बहुत मोटिवेट होगा, एंड दिस इज दैट वी विल लॉन्च द फोन विद द नेम ऑफ Monk iPhone, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया Monk iPhone।
बट डू यू थिंक दे नीड टू प्लान द थिंग बिफोर दे आर लॉन्चिंग द आईफोन? बच्चा बोला हाँ। क्या क्या प्लान करना पड़ेगा? व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू प्लान? बताइए चैट पे। व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू प्लान? अरे बोलो 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 बोलो। व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड टू प्लान इफ यू वांट टू लॉन्च आईफोन? इन द चैट प्लीज। हाँ, कोई कह रहा है मार्केट साइज, वेरी गुड। कोई देखना पड़ेगा फीचर्स, ओके। कोई अरे सिंपल, सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप। Which city I need to set up a factory? How big the capacity of a factory should be? How I'm going to be procuring a material, right? How many units I'm going to be producing every month? सब प्लान करना पड़ेगा. Let us assume that Amazon decides that we'll produce 10,000 units. For that, we need 100 crore. ठीक है? This is the part of planning. Now, after that is done, they are going to be reaching out to the people and customers for selling the product. मान लो 8,000 फोन बिके, कितने नहीं बिके? 2,000 नहीं बिके. What they'll do, they'll analyze what has went wrong. Financial planning and analysis. प्लान किया था, बिकेगा 10,000, बिका 8,000. Differentiation 2,000. Why the hell 2,000 if not sold? You're working closely with a business, right? FP&A is very nice domain if you're interested to work closely with business. तो मैंने नंबर प्लान किया, फिर एनालाइज किया, प्लान किया, एनालाइज किया, प्लान किया, ये होना चाहिए, एनालाइज किया, ये क्यों नहीं हुआ. सिंपल. तो दैट इज व्हाट अ रियल फंक्शन इज. अगर आपको कॉस्टिंग पसंद है, सॉरी एसपीओएम पसंद है, एसपीओएम में कॉस्टिंग पार्ट पसंद है, तो आप जा सकते हो. ठीक है, तो दैट इज रियली अ ग्रोइंग डोमेन. ठीक है, तो दिस इज देयर. स्टार्टअप्स में भी आप जा सकते हो, राइट. स्टार्टअप्स में सब फंडिंग वगैरह देख के जाना चाहिए कि व्हाट इज द फंडिंग विच इज देयर विद द कंपनी. तो दैट इज व्हाट यू कैन डू. एंड द लास्ट, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग ऑफ बीट, लाइक पब्लिक पॉलिसी में आप जा सकते हो, आर्ट्स टीचर बन सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत चल रहा है, एंड हर दूसरा आदमी रील बना रहा है. ठीक है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आप बन सकते हो. So this all things you can try it out if you are interested in offbeat track. Plus also you, if you are interested, you can also start doing a practice as well. ठीक है, तो ये सब करियर ट्रेजेक्टरी ऑप्शन है आपके पास. एक अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो इसमें से आपको कुछ ना कुछ चूज करना पड़ेगा. जिस देर इसमें काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी बहुत डिटेल में है, बाई साइड सेल साइड, फिर फंड अकाउंटिंग, इक्विटी रिसर्च. तो वो सब में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ बिकॉज वो एक आईबी के सेशन में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड है. बट दिस आर द मेजर डोमेन्स विच यू आर गोना बी building and using as a part of your career option as a chartered accountant, right? Right, I hope this is something which I wanted to cover, and this is what it is. And now we'll open the forum for doubts. अभी तक के बट चीजें आपको समझ में आई, आपको मजा आया, नई चीज सीखी आपने, राइट. आई होप आपने कुछ तो नया सीख लिया होगा कि हाँ यार, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, ये सोचा ही नहीं था, राइट. ओके, ठीक है, डन. वेरी वेरी गुड. अब डाउट्स लेते हैं, राइट. विल टेक द डाउट्स फ्रॉम द यूट्यूब चैट एज वेल एज फ्रॉम जूम चैट, बट पहले यूट्यूब चैट ले लेते हैं बिकॉज यूट्यूब पे एक जगह देखेंगे तो इजी रहेगा. इसके साथ साथ लास्ट अपडेट, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, कल से बैच चालू हो रहा है भैया. जो आना चाहते हैं आ जाए, राइट. लास्ट अपडेट है. फिर बैच, नेक्स्ट बैच जो आएगा वो सीधा इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम, इसमें भी आई थिंक फ्यू सीट्स लेफ्ट है. ये पहला बैच तो फुल हो गया है. आज कल से चालू हो रहा है 7 PM to 10:30. विल हेल्प यू आउट टू प्रिपेयर एवरीथिंग नीडेड टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड. ये आज मैंने एकदम शॉर्ट में डिस्कस किया है, वही चीज हम बैच में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट बैच जो आएगा, मॉर्निंग बैच रहेगा, 27 जुलाई से आएगा. इफ यू वांट कि we should help you out for your preparation for interviews end to end, right? End to end, that means right from resume building, नौकरी, लिंक्डइन. मेरा लिंक्डइन का सेशन 6 घंटे का होता है वर्कशॉप में, 6 घंटे का. मैं 6 घंटा लिंक्डइन चलाना सिखाता हूँ. आई विल हेल्प यू टीच फाइंड आउट अ गॉड. भगवान ढूंढ के दिखाऊंगा आपको लिंक्डइन पे. ठीक है, नौकरी का सेशन हम लोग 2 घंटे करते हैं. ठीक है, तो आप देख लो 8 घंटे तो सिर्फ जॉब कैसे ढूंढना वो सिखाते हैं. अभी तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, बट विल टीच आउट हाउ टू फाइंड आउट अ जॉब इन वेरी डिटेल मैनर, राइट. एंड द फीस इज ऑल्सो वेरी नॉमिनल, इट्स 5,299, राइट. अगर 5,000 भी बढ़ गए इस वर्कशॉप को करके तो बैच फीस रिकवर्ड. ठीक है, और वो तो बढ़ ही जाएंगे यार, इतने रेफरेंसेस मिलते हैं, इतना नेटवर्किंग होता है, तो दैट इज. ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट टेकिंग द डाउट्स फ्रॉम द यूट्यूब लाइव चैट एंड देन विल कम टू जूम चैट. तो जिसको जूम वालों को भी डाउट है यूट्यूब पे डालो, क्योंकि एक ही जगह रहेगा ना तो इजी रहेगा. इधर देखो फिर उधर देखो, फिर इधर देखो फिर उधर देखो, इट्स टफ फॉर मी. तो लेट्स टेक द डाउट्स फ्रॉम द यूट्यूब चैट फर्स्ट. सर 5 to 6 अटेम्प्ट वालों को बिग फोर सिलेक्ट करती है क्या?
रेफरेंसेस रहेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज व्हाट आई कैन से। When are you taking session on resume building? दीपिका जी, resume building तो सेशन डला हुआ है यूट्यूब पे, एक बार आप देख लीजिए, आप स्क्रॉल करोगे you'll find it out. सर व्हाट आर द नीश डोमेन्स मींस? नीश डोमेन्स मींस मतलब जहाँ पे अब कैसे बताऊँ उसको, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग नीश है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा रहेगा, राइट, और काफी कम लोग को पता है, तो दैट इज हाउ आई डिफाइन द नीश। सर बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, कुछ गाइड कर दो। अरे रे, जॉब के लिए? तो बेटा अभी आपको सबसे पहले रिज्यूम बनाना चाहिए, और फिर देन यू नीड टू स्टार्ट डिसाइडिंग ऑन डोमेन। लिंक्डइन और नौकरी में एग्रेसिव हो जाओ, वहां से आपका अच्छा जॉब मिल जाएगा। आई हैव रजिस्टर फॉर GR 21, विल यू अनदर सेशन ऑन इट? बेटा दीपिका जी, वहां पे तो बहुत डिटेल सेशन होगा डोमेन वाइज का, तो टेंशन मत ले। देखो डिफरेंस बिटवीन एफडीडी एंड वैल्यूएशन, पहले ड्यू डिलिजेंस होगा, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट विच इज देयर ऑन ड्यू डिलिजेंस वैल्यूएशन होगा, राइट? पहले एफडीडी होगा, उसके बेसिस पे ड्यू डिलिजेंस होगा किसी कंपनी, right? So that is there. Sir, in articleship, even if there were many things we have learned, but still the entire domain isn't covered. How to build those parts? तो देखो हम लोग क्या किए हैं, राइट? वी हैव बिल्ड आउट वन गुड थिंग्स एंड दैट इज अ मास्टर क्लासेस फॉर ईच डोमेन। तो जैसे स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास की बात करता हूँ, तो इट इज एवरीथिंग इज taught to you in a master class practically, राइट? ये 25 घंटे का कोर्स है, इट इज देयर, राइट? 25 आवर्स का कोर्स है, एंड एवरीथिंग विच इज प्योर इन दिस मास्टर क्लास इज taught to you from zero level, राइट? जीरो से सिखाया कि एक ऑडिट में वर्क पेपर कैसे बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, और प्रैक्टिकली सिखाया। तो बेस्ट थिंग इज दैट यू विल गेट दिस मास्टर क्लास इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ जीआर। अगर आप नहीं हो तो आप अलग से भी खरीद सकते हो, तो मास्टर क्लास आप कर सकते हैं। बैंकिंग हायरिंग फ्रीजिंग है क्या? नहीं, बैंकिंग हायरिंग फ्रीजिंग नहीं है संजना जी, आईसीआईसी बैंक में हायरिंग हो रहा है, राइट? पलक जी कह रही व्हाट इज द बैच साइज ऑफ जीआर डज नॉट मैटर, राइट? इंपॉर्टेंट ये है कि आपका डाउट्स रिजॉल्व होंगे, आप पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, बात खत्म। बैच साइज कितना भी रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Sir, I want start audit, but did not have an articleship experience. I told you out how to proceed for interview. Start audit masterclass is a solution for you. Sir, I have no idea to choose a domain. In order to choose a domain, can I switch it later? The answer is yes. आप switch कर सकते हो, but ऐसा नहीं है। Say for example, if you start your career from taxation, it's difficult to switch into some particular domains later, right? Banking से चालू किया तो थोड़ा सा funneling issue होगा, तो वही चीज है, आपको domain select करना है wisely when you choosing a domain. Is FEMA a good profile? If you're interested, then you can go for it. How HR will get to know about attempts? HR को तीन तरीके से पता पड़ता है attempts से। Number one, your age. Number two, when did your articleship got completed? And number three, right, they'll ask you some questions which might make you direct or indirect answer. उससे उनको attempts के बारे में पता पड़ जाएगा, right? GR is mostly for finance students if he is pursuing CA, CFA, right? तो mostly अभी तो CA final वालों के perspective से है, those are clear, but other students can also enroll for it. Sir, if you do not have any prior experience, इतना prior domain, I've already covered this out. Gauri Kumar is asking, sir, I don't have a knowledge about a LinkedIn and domain. Will it GR batch help? The answer is yes. सर फाइनल में अटेम्प्ट काउंट होते हैं बस फॉर जॉब या इंटरव्यू के लिए ना? फिर एग्जांपल, व्हेन यू आर गोना बी फिलिंग आउट द आईसीए फॉर्म, राइट, आपको इंटर के भी अटेम्प्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है? तो दैट इज। सर एमबीए फ्रेशर के लिए भी करियर पाथ बता दो सर। बिल्कुल बेटा, अलग से सेशन लेंगे, उसको बता देंगे। सर इज द रोल ओरेकल और ईआरपी फाइनेंशियल कंसल्टेंट गुड? देखो, इफ यू लव टेक्नोलॉजी, इफ यू लव प्रोसेसेस, आपको ओरेकल ईआरपी कंसल्टिंग डोमेन आप चूज कर सकते हो, राइट? ये किसने पूछा था? श्रेया जी ने, राइट? नेक्स्ट। सर फाइनल का अटेम्प्ट का हो गया, ऑन बेसिस ऑफ अटेम्प्ट्स बेस्ट डोमेन? बेटा ये नहीं है, आप देखो, आप अपने आप को ही आप डाउनग्रेड करोगे तो ये तो बात ही खत्म हो गई, राइट? आपको प्रिपेयर करना है, रेफरेंसेस ढूंढना है, अप्लाई करना है, ऑफकोर्स विल रीच योर पाथवे। एक और क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल डेटा से बिजनेस डिसीजन कैसे ले? इसके लिए आप मेरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है वो एक बार देखो, आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा। कैन वी पुट मास्टर क्लास इन रेज्यूमे? द आंसर इज यस। सर ऑफ कैंपस स्टार्टेड, प्लीज गाइड ऑन एप्लीकेशंस। वही मैंने बताया, सिंपल है बेटा, आपको लिंक्डइन और नौकरी पे अकाउंट बनाना है, सर्च करना है और अप्लाई करना है। इन जीआर बैच विल वी गेट वन टू वन गाइडेंस? द आंसर इज यस। सर हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, हाउ सी फाइनल अटेम्प्ट्स आर काउंटेड? नंबर ऑफ टाइम यू फिल्ड आउट आईसीए फॉर्म इज काउंटेड एज अटेम्प्ट। सर आई वांट स्टार्ट ऑडिट, ओके, I don't have experience in start audit. How to proceed for interview? I've told you out, start audit masterclass. Sir, not applied anywhere. Now joining GR 61. Should I wait for CV session or CV review session then apply offline? The answer is yes.
चलिए आपको वेट करना चाहिए। सर, इज ऑफ कैंपस स्टार्टेड, प्लीज गाइड ऑन एप्लीकेशन, बता दिया राजा। जैसे पुराने डाउट्स चल रहे हैं, सॉरी। कंपनीज दैट ऑफर द रोल ऑफ वैल्यूएशन एंड एफडीडी। यस, एफडीडी इज ऑफर्ड बाय ऑल द कंपनीज व्हिच इज देयर। वैल्यूएशन रोल आपको आईबी फर्म सर्च करनी चाहिए, जैसे अभी हमने एम्बिट और क्रोल का हमने वैकेंसी डाला हुआ है, जेपी मॉर्गन में आपको मिल जाएगा, राइट, एएनएम में मिल जाएगा, अल्वर हसन मार्शल में, तो ये सब कंपनीज से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, हाउ शुड आई चूज माई डोमेन, यू नीड टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सर, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस में इशू होता है क्या? मैं फाइनल में 4 अटेम्प्ट है, इंटर में 6। देखो, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू डिलीवर योर स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा रहा तो अटेम्प्ट का दिक्कत नहीं आएगा। कैंपस एप्लीकेशन प्लेसमेंट प्रोसीजर का सेशन का वीडियो कल यूट्यूब पे डल जाएगा, राइट, विच इज गोना बी देयर। मैं मोस्टली कल यूट्यूब लाइव पे आऊंगा, तब आप आके साथ में मेरे साथ देख लेना या कैसे करा जाता है पूछ लेना। ठीक है। बिग टाइम कितने अटेम्प्ट तक लेता है? राइट, जनरली सच बोलूं तो 4 और 5, बट अगर आपका रेफरेंस अच्छा रहा तो दे कैन रिव्यू इट आउट। हाउ टू फाइंड रेफरेंसेस, you need to connect with people on LinkedIn, reach out to them, ask for references. Okay. What's your take on private equity and venture capital? If you're interested, then go for it. हेड पटेल आपको हेल्पफुल रहेगा, अच्छा अच्छा डोमेन है। लिंक्डइन प्रीमियम लेना चाहिए क्या? ले लो बेटा, 1 मंथ फ्री है, यूज इट आउट एंड ट्राई टू फाइंड आउट सम रेफरेंसेस। सर, माय आर्टिकलशिप इज डमी, हाउ आई कैन फाइंड माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट? अरे रे रे रे, बहुत ही खतरनाक सवाल। राइट, तो आपको मेरे डोमेन वाइज सेशंस देखने चाहिए, फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कौन सा आपको डोमेन चूज करना चाहिए। ठीक है। So I think most of the doubts are covered, but still I know there are few queries which is there, right? There are few doubts which are still there. तो एक काम करेंगे, फिर से कमेंट सेक्शन में डाल देना, राइट। मैं एक वीडियो में आके पूरे क्लैरिटीज और डाउट्स एक साथ क्लियर कर दूंगा, राइट, इफ एनी ऑफ द डाउट्स व्हिच आर लेफ्ट, राइट। और वैसे भी कल हम लोग एक और बार यूट्यूब लाइव आएंगे, तो कल के जो आईसीआई कैंपस के सेशन में हुआ था, उसमें इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन पुट इट आउट इन द कमेंट, आई विल जस्ट सी दैट डाउट व्हिच आर देयर, एंड आफ्टर दिस इज डन, राइट, आई विल इंश्योर दैट कल हम यूट्यूब लाइव में आके वो डाउट्स आपके सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो गाइज, चलते हैं अभी अभी के लिए, राइट, बट आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू गाइज कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस एंड स्टार्ट अप्लाइंग टू सम कंपनीज व्हिच आर देयर, एंड यू प्रिपेयर वेल सो दैट यू कैन गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। एक पर्पस जिससे आपने सीए स्टार्ट किया था वाज टू स्टार्ट अर्निंग अ गुड मनी, एंड नाउ इज द रियल टाइम टू प्रूव योरसेल्फ, राइट। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ऑल टुगेदर, वेर यू नीड टू रियली वर्क हार्ड एंड इंश्योर दैट यू गेट इनटू बेस्ट कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशंस को सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ो, राइट, विच इज देयर, राइट, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑफ कोर्स वी आर देयर, राइट। कल से बैच चालू हो रही है, एक बार बैच चालू हो गई, राइट, सर पटक लो, हाथ पटक लो, जो पटकने पटक लो, आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट बैच में आना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज दैट। तो ग्रेट गाइस, बढ़िया से पढ़िए, राइट। कुछ हेल्प चाहिए होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वैसे तो काफी सारे सेशंस आपके लिए प्लान करे ही हुए हैं, राइट, बट इफ यू नीड एनी मोर हेल्प डू लेट अस नो। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर इंटरव्यूज, एंड बढ़िया से पढ़ो, राइट, और बढ़िया से आप प्रिपेयर करो। ठीक है, डू वी नीड टू प्रिंट आउट अ मटेरियल फॉर जीआर? द आंसर इज यस। ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं। बाय 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 बाय।